Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the structure of bacterial cell. So let's move to the class part. So dear students, bacterial cell structure. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे अगले 3 से 4 जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है और इसमें हम कुछ क्लासिफिकेशंस भी पढ़ेंगे। 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक फ्लैजिला की बेस के ऊपर जो कि बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्लासिफिकेशंस और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के अंदर, सेल के अंदर और सेल के बाहर, उन सब को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर जो डिस्कस किया गया है हमारे इस बुक के इस टॉपिक के अंदर, दैट इज फ्लैजिला। अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और शॉर्ट के अतबार से भी अहम है। इसमें से डिफरेंट शॉर्ट्स आ सकते हैं, वो मैं आपको साथ साथ जो है वो मार्क करवाता जाऊंगा। सो फ्लैजिला, तो नाम आपने सुना हुआ फ्लैजिला का। That is basically the plural form of flagellum. Flagellum singular है. So first of all, we are going to define what are they, flagella. So flagella, these are extremely thin. Wording पे गौर करना dear students आपने, जो MCQs point of view से important है। Extremely thin, बहुत ही बारीक, जैसे कि बाल, इसीलिए इसके साथ वर्ड ऐड है हेयर लाइक। हेयर लाइक appendages, अपेंडेज बेसिकली किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो मेन ट्रंक से निकल रहा हो, ठीक है, दैट इज नॉन एज अपेंडेज। जो मेन बॉडी से कोई भी स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है या निकल रहा होता है उसे हम अपेंडेज कहते हैं। क्लियर? सो अपेंडेजेस दैट आर originated just beneath the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं ये, वहां से इनका ओरिजिन होता है। क्लियर? एंड दे आर मेड अप ऑफ they are made up of a special protein called flagellin. That is called flagellin. फ्लैजिला से याद रखेंगे, फ्लैजिलिन। सो स्पेशल प्रोटीन है जिससे ये मिलकर बनते हैं। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस
of presence, number 1. And number number 2, and their arrangement bacteria are classified as, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला की बेस के ऊपर, उनकी तादाद यानी नंबर के बेस के ऊपर, और उनका जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है कि कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, उसके बिहाफ के ऊपर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया होते हैं। सिर्फ फ्लैजिला की बात हो रही है, ठीक है। अरेंजमेंट ये किसकी बात हो रही है? फ्लैजिला की, ठीक है। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज एट्राइकस, monotrichous, number 3, lophotrichous, number 4, amphitrichous, and number 5, the peritrichous. So this is the classification of bacteria on the basis of presence and number and arrangement pattern of flagella, ठीक है। flagella के जो सी नंबर, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस और उसके अरेंजमेंट के पैटर्न के हिसाब से ये इनकी डिफरेंट जो है क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ये फॉर्म्स कह सकते हैं, स्टेट्स कह सकते हैं, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरिट्राइकस। सो हियर वी गो। So classification of bacteria. On the basis of flagella, और फ्लैजिला के वो तीनों करेक्टर्स शामिल हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लियर? सो ऑन दैट वेरी बेसिस द बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फॉर्म्स of 5 states. Number 1, atrichous, bacteria. So atrichous bacteria, dear students, the bacteria without any flagella, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, that is known as atrichous, and it looks like this, a simple bacteria. Clear? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब एक और चीज़ मज़ीद आगे क्लासीफाई करने से पहले जो इसके साथ फ्लैजिला से ही रिलेटेड है, ये जो फ्लैजिला है स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, और दे ओरिजिनेट फ्रॉम द जस्ट बिनीथ द सेल मेम्ब्रेन, और ये अंदर अटैच होते हैं एक और स्ट्रक्चर से
that is known as basal body. So I'm going to write over here the basal body. The flagella are attached with basal body and come out of the cell wall, और सेल वॉल से फिर वो बाहर आ जाते हैं, अंदर से अटैच्ड है। अभी मैं यहाँ पर इस बेसल बॉडी का भी स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करता हूँ। सो बेसल बॉडी ये बेसिकली इस तरह से रिंग्स होते हैं, सर्कुलर रिंग्स, और ये इस तरह से, और इनके साथ अटैच होती हैं, देयर इज अ हुक, इसके पार्ट्स हैं कुछ, ठीक है, और इसके साथ फिर आगे अटैच है द फ्लैजिला। तो फ्लैजिला को मैं इससे शो करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पर लाइक दिस। सो this one is known as, that is basal body, ठीक है, और ये बाहर से that is a cell membrane, plasma membrane, बैक्टीरिया इस तरह से मौजूद है, ये इसके अंदर मौजूद, क्लियर। सो दिस इज flagellum, and this one is called as hook, जिसके साथ, अच्छा इसका फंक्शन क्या है बेसल बॉडी का, ये क्यों इसके साथ अटैच होते हैं? ये जैसे कि जस्ट लाइक अ मोटर, एक रोटेटरी मोटर है जिसको ऐसे ये अंदर से बेसल बॉडी से घूमेगी, जिसकी मदद से फ्लैजेला जो है उसको वो मूवमेंट दी जाती है, जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे मूव करता है एंड प्रोवाइड्स अ लोकोमोशन, जिसकी मदद से बैक्टीरिया जो है वो मूव करते हैं, क्लियर। सो बेसल बॉडी इट हेल्प्स इन रोटेटिंग द फ्लैजेला, ताकि वो मूव करे, और जब इसकी इस तरह से मूवमेंट होगी, ये अंदर से घूमेगी, जैसे कि ये मोटर है, मोटर के साथ फ्लैजिला लगा हुआ, मोटर घूमेगी तो साथ में फ्लैजिला घूमेगा, और इसी के मूवमेंट के साथ जो है वो इसके सर्कुलर मूवमेंट से जो बैक्टीरिया जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। नाउ द सेकंड वन आर द मोनोट्राइकस, bacteria. So bacteria having single flagellum at poles, at pole, वो इस पोल पे भी हो सकता है, वो इस पोल पे भी हो सकता है। So here is और यहाँ पर मौजूद है द बेसल बॉडी, और इसके साथ अटैच है a hair-like appendage, very thin, extremely thin hair-like appendage. This is called as monotrichous bacteria, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर that is the chromatin body and some ribosomes, etc. etc. So इसका डिटेल स्ट्रक्चर आगे चलकर मज़ीद डिस्कस होगा, यहाँ पर जस्ट हम फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, ठीक है। Then is Lophotrichus, bacteria. So as far as Lophotrichus are concerned, the bacteria having tuft
of flagella at one end, एक एंड के ऊपर टफ्ट, टफ्ट कहते हैं गुच्छे को, ठीक है. सो हियर इज bacterium, a basal body, and this is a tuft of flagella, ठीक है. सो एक ही पोल के ऊपर एक टफ्ट हो, गुच्छा हो. So this kind of the bacteria in this state is called as Lophotrichus bacteria. Now the fourth category is Amphitrichus. Bacteria. So in case of Amphitrichus, the bacteria having tuft of flagella at both poles or ends. So that is known as Amphitrichus. So this is tuft of flagella at this pole and tuft of flagella at the other pole attached to the basal bodies. Clear? And this trait, the bacteria is called Amphitrichus or Amphitrichus. And the fifth category is Peritrichus. Peritrichus bacteria so peri means, जी स्टूडेंट्स पैरी किसे कहते हैं? पैरी मीन्स अराउंड, ठीक है. सो बैक्टीरिया हैविंग flagella, not tuft but flagella all around the cell, ठीक है, चारों तरफ all around मौजूद होंगी. So that kind of bacteria is Peritrichus. So over here and here. So this is a Peritrichus bacteria. Clear? So Atrichus, no flagella. Monotrichus, single polar flagellum. Lophotrichus, a tuft of flagella at one end or at one pole. Amphitrichus, a tuft of flagella at both poles or ends. So this is Amphitrichus, and Peritrichus having flagella all around. चारों तरफ इसके मौजूद हैं, all around मौजूद हैं. So that is the classification of bacteria on the basis of flagella. So इसमें आपको short question में पूछा जा सकता है comparison between Atrichus and Monotrichus, Monotrichus and Lophotrichus, Lophotrichus and Amphitrichus, or Atrichus and Peritrichus. So this is how it could be asked. अब बात करेंगे कि इसमें फंक्शन क्या, एक्चुअली फ्लैजिला के फंक्शंस की तरफ आते हैं और प्रेजेंस की. So dear students, remember this point that flagella
are present in most of rods and spiral bacteria. ज़्यादातर किस में मौजूद है? स्पाइरल शेप्ड और इससे प्रीवियस हमने जो शेप्स पढ़ी थी और दूसरा रॉड्स की, ठीक है. द कॉक्साई और कोकाई, द फ्लैजेला आर रेयर इन कोकाई, ठीक है. कोकाई के अंदर ये रेयर होते हैं. एंड नंबर 2 इज their function, the primary function, ये MCQs के लिए याद रखना है, ठीक है. Primary function of flagella is to provide with motility. To provide with motility. Motility means movement, ठीक है. Motility means movement. So movement के लिए जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बेसल बॉडी है ये रोटेटरी एक मोटर की तरह काम करती है, तो ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा. एंड इट is also involved in detecting chemicals. ये एक सेंसरी जैसे ऑर्गन होता है, केमिकल्स को डिटेक्ट करेगा, ठीक है. इन केमिकल्स एंड let the bacterium move towards the chemicals. And this type of movement is called chemotaxis. Is called chemotaxis. याद रखिएगा व्हाट इज chemotaxis. तो बैक्टीरिया ये फ्लैजिला जो होते हैं मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और उनको सेंस करते हैं और लेट द बैक्टीरिया मूव टुवर्ड्स द केमिकल, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द केमिकल्स. सो इस तरह से जो इनके सराउंडिंग यानी कि एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे, तो वो मूवमेंट जो केमिकल्स की वजह से हो रही हो, उसकी डिटेक्शन की वजह से हो रही हो, उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस. कीमो मीन्स केमिकल, टैक्सिस मीन मूवमेंट, क्लियर. और लेकिन प्राइमरी फंक्शन याद रखिएगा फ्लैजिला, दैट इज टू प्रोवाइड विद मोटिलिटी. ये सेकेंडरी फंक्शन है कि उसको डिटेक्ट करना केमिकल्स को या इस तरह से, ठीक है. और मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसके अंदर मौजूद है? रॉड्स में और स्पाइरल में. रेयर किस में है? कोकाई के अंदर. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये सेकंड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है बैक्टीरिया की. फर्स्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला. अभी 3 और क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं जो आगे चलकर लेक्चर्स में आएंगी. ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम 3 टॉपिक था आज का. सो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.